So student, what is the moral of this particular story of Vilas and Sakal? Or you can say what is the, you can summary or heading of these two stories. So the moral or the heading or the summary is importance of education and health. Only these two factors, education and health, we can able to be a asset for our family, for our society, for our country, not a liability. Okay, we means working population. अगर आज का सिनेरियो में बात करें, you all are just a liability, not a asset, because your parents are investing in you right now. So at this time when parents are investing in you, just so that you can become a asset for not only for your family, for your society and country. और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? In a form of education, good food, good medical facility, good behavior, good character, so that you can become a good citizen of your country. So the motto of these two stories putting in your chapter is only to show you the importance of education. So now we will discuss about these two stories. चैप्टर में अब क्या है, इस स्टोरी का डिस्कशन है, पेज नंबर 18 और 19. That in two cases we see that Vilas did not go to school, whereas Sakal go to school. Now in this particular discussion, sometimes there is a question also in exam. So read this, listen this discussion very carefully and read it also, because there is a question. What is the difference between Vilas and Sakal? Clear? Sakal physically healthy and strong, और उसको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. जब हम विलास से उसको कंपेयर करें तो विलास इज नॉट अ हेल्दी बॉय. ही ऑफन यूज टू गो टू द डॉक्टर, जबकि उसके पास पैसा भी नहीं होता था. आफ्टर दैट, with the help of education, Sakal has acquired good skill. Clear? And on the basis of that skill, he is capable to earn money. And विलास वही काम कंटिन्यू कर रहा था जो कि उसकी मदद करती. अगर सकल भी वही करता जो कि विलास ने किया, then what will happen? Then सकल will also do the same work जो कि उसके फादर कर रहे थे, just like a farm labor. But सकल ने ऐसा नहीं किया. He take the advantage of that education. उसको मौका मिला तो उसने क्या किया, उस मौके का फायदा उठाया और एजुकेशन. So again, in case of Sakal, what we are seeing that lots of years of education से क्या उसको मिला कि उसकी जो क्वालिटी थी लेबर की, that was improved. क्वालिटी इंप्रूव हुई. लेबर उसके फादर भी करते थे एज अ फार्म लेबर, मेहनत वो भी करते थे, मेहनत वो भी कर रहे हैं, बट क्वालिटी चेंज हो गई. जहाँ उसके फादर, वी कैन से अ फार्म लेबरर जस्ट अर्न ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 200 to 300 रुपीज अर्न कर पाते हो, हार्डली, though it is not possible. I think only 100 or 150 that his father will be able to earn. वो भी कब? जब खेतों में काम होता.
नॉट राउंड द ईयर. बट अगर हम सकल की बात करें ना, ही बिकॉज ही गेट अ गुड जॉब, गेटिंग अ अट्रैक्टिव सैलरी, दो ही इज ऑल्सो डूइंग अ लेबर, बट उसके लेबर की क्या चेंज हो गई? क्वालिटी. क्लियर? वी आर टेकिंग एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग, कई बार उन एक ही चीज के दामों में बहुत फर्क होता है. व्हाई इट इज डिफरेंस? ओनली बिकॉज ऑफ क्वालिटी. बोथ आर डूइंग द वर्क बट द क्वालिटी इज चेंज ऑफ देयर लेबर. सो यहाँ पर पढ़ाई का उसको क्या फायदा मिला कि इसकी जो क्वालिटी थी लेबर की वो क्या हो गई? चेंज हो गई. उससे चेंज होने से क्या हुआ? टोटल प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज. और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उसके अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुई. उसकी इंप्रूव हुई तो सोसाइटी की भी इंप्रूव हुई, और सोसाइटी की कंट्री इकोनॉमी विल ऑल्सो इंप्रूव. Got it? So in this particular manner we can say that the Sakal has taken the advantage of education. इसीलिए पेरेंट्स भी आपको फोर्स करते हैं टू बी एजुकेटेड so that you can improve your own quality. You can be a skillful boy or a girl, attain some skills or trainings which give you a good result in future. अब अगर विलास की बात करें तो विलास ने कोई एजुकेशन नहीं ली. हेल्थ केयर भी अर्लियर उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, और वो वही सेम काम कर रहा था जो उसकी माँ ने किया. सो यहाँ पर उसकी जो क्वालिटी ऑफ लेबर थी वो क्या हुई? सेम एज हिज मदर. He did not develop any skill as the skill developed by the Sakal. So this is the difference of education and good. So when we invest in human resource as our education and medical facility, उसका रिटर्न हमको फ्यूचर में अच्छा मिलता है. That's why also you see that your parents are investing in you. All parents are very cautious about their own child health, and I think वो जितना उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ही आपको बेटर एजुकेशन, बेटर मेडिकल फैसिलिटी और बेटर फूड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. क्लियर? सो व्हेन वी इन्वेस्ट इन दिस ह्यूमन रिसोर्स इन टर्म ऑफ अगेन एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, उसका जो रिटर्न है फ्यूचर में हमको बहुत अच्छा है. इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़ाई का जो बीज है वो बड़ा कड़वा होता है, बट उसका जो फ्रूट है, फल है, दैट इज वेरी स्वीट. एंड व्हेन यू ग्रोन अप एंड गेट अ गुड, become a good citizen, be financially very good, then you can able to see that the fruit of the education, the seed of that education which was bitter for you, now the fruit of that particular education is very sweet for you. Clear? So here we can say that the importance of education and health is very important for the development of not only your family, your society, but for the country also. और इसीलिए कहते हैं कि if parents are educated, what they try to do, they try to educate their children also, whether they are not earning. यहाँ पर money is not a matter, though it is play a very important role in our life. Still parents अगर educated हैं, then they know the importance of education, and
because of they are educated, they invest as much as possible in the education of their children, because they know the importance of education. And also they are very cautious about your health, your hygiene, your food, so that you can become more healthy, not only physical but also mental. And इसके लिए whatever they can do, they try to. और यहाँ पर एक नया वर्ड आता है, वो क्या कहलाता है? वर्चुअस साइकिल. When the parent is educated, they know the importance of education. So what they do, they try to educate their own children also. When children get educated and when they become adult, and when they have children, because they know the importance of children, then again they try to give good education, health and medical facility to their own children. और ये क्या चलता रहता है? साइकिल. और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? वर्चुअस साइकिल. A virtuous cycle is thus created in these cases. कौन सा साइकिल? Virtuous cycle. That educated parents educate their own child, and the child, जो आज बच्चा है, आने वाले टाइम में when जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो वो भी अपने बच्चों को क्या करना चाहेगा? एजुकेट करेगा. And so on this process goes. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वर्चुअस साइकिल. अब इसका उल्टा भी है, कॉन्ट्रास्ट भी है. कॉन्ट्रास्ट क्या है? विश्वस साइकिल. विश्वस साइकिल में क्या है? सेम स्टोरी है विलास और सकल वाली. विश्वस साइकिल, that because Vilas mother is not educated, she did not know the importance of education and good health. So what she do, उसने विलास को कभी फोर्स ही नहीं किया कि बच्चे आप स्कूल जाओ, पढ़ने जाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमेजिन अगर विलास भी सकल की तरह स्कूल जाता, पढ़ता, लिखता, तो मे बी उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर चेंज हो जाती, उसकी कंडीशन इंप्रूव हो जाती. मे बी दैट बॉय ऑल्सो गेट समवेयर जॉब ड्यू टू द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग. Clear? So if the parents are uneducated, they don't know the importance of education, good hygiene, good medical facility. So what happened? वो अपने बच्चों को भी उसी सेम कंडीशन में रखते हैं जिसमें कि वो रहे हैं. और फिर आगे वो बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो कम इन अ सेम सिनेरियो. वो अपने बच्चों को भी उसी कंडीशन में रखते हैं. और ये साइकिल जो है ये चलता रहता है. दैट्स गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? इट इज रिटन इन योर बुक. इट इज विश्वस साइकिल. वर्चुअस और विश्वस साइकिल पेज नंबर 19 लेफ्ट हैंड साइड पैराग्राफ में है आपका. अगेन दोबारा बता रही हूँ मैं आपको. वर्चुअस साइकिल, व्हेन पेरेंट्स आर एजुकेटेड, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और वो अपने बच्चों को भी क्या कर रहे हैं? एजुकेट कर रहे हैं. व्हेन एंड गिविंग देम अ गुड हाइजीन environment, good medical facility, good food. Same way, what happened? The child also follow the same process. The process which was followed by his or her parents, he or she follow the same process to his or her own children. और यही साइकिल आगे से आगे चलता रहता है, और उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअस साइकिल. वर्चुअस का अपोजिट क्या है? विश्वस साइकिल. इसमें क्या है? दैट पेरेंट्स आर अनएजुकेटेड, दे लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन, दे डिड नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. सो व्हाट दे डू, वो अपने बच्चों को वैसे ही रखते हैं.
and the same process follow to their own children's. Or this cycle goes on and on and on. And that was vicious cycle. Clear? So this is virtuous and vicious cycle, an important part of this particular analysis, or we can say story. अब वर्चुअस साइकिल का एग्जाम्पल क्या है? सकल. तो उसके पेरेंट्स according to story are not very educated. Clear? But they know the importance of education. So what they do, they provide education for their own child. और वर्चुअस साइकिल का एग्जाम्पल है, सॉरी विशुअस साइकिल का एग्जाम्पल क्या है? विलास. बिकॉज उसकी मदर अनएजुकेटेड, used to live in an unhygienic condition, unhealthy condition, lack of medical facility. Same process उसने किसके साथ फॉलो किया? विलास के साथ. Now Vilas did not get the education. Again, he did not know the importance of education. He will also do the same process with his own children. So that is vicious cycle. अब यहाँ पर एग्जाम्पल है जापान. You all know that Japan is an island country. बहुत छोटा सा देश है if we compare to our own country. So why the example of Japan has been taken? You know that at the end of Second World War there was a atomic bomb drop on Japan, and Japan just destroyed. Still, अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो आज भी जापान इज कंसिडर्ड टू अ डेवलप्ड कंट्री. वाई? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. 45 में 1945 दैट एटॉमिक बम वाज ड्रॉप ऑन जापान. ऑफ इंडिया गेट इंडिपेंडेंस ऑन 47. बट डिफरेंस क्या है? वाई इंडिया इज स्टिल not under a category of developed country? Only because these two factors, education and health. Whereas Japan comes in a developed country because they invest very, you can say, much in their human resource. Though they have no natural resource, उनको मालूम है हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है किसी तरह के उनके पास में. एंड जापान, द लोकेशन ऑफ जापान इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड. they, because it is an island country, they have to suffer lots of earthquake, then volcano, then tsunami. All the natural disasters are coming there. But because the people of that country are educated, skillful, they know how to pop up all these natural disasters. Clear? So we can say, so main important thing क्या है? To invest in human capital. So they import natural resource need in their country. लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड क्यों है? तो उसका आंसर है, Japan is a developed country because they invest in their human capital in terms of education and good health. Or because the people of Japan are educated and healthy, so they know कि कम से कम रिसोर्स में भी कंट्री को कैसे डेवलप करना है. हाउ टू डेवलप देयर ओन कंट्री though they have lack of resource, only because of the powerful weapon, and that was knowledge and health. That's why only the example of Japan is taken here, because it is an example for whole world. A country which was just destroyed in 1945 only due to this atomic bomb. Now that particular country has just raised up, just like other European countries.
Clear? That's why the example is taken here only of Japan. So people can use their land and capital very effectively. और इसी कारण से efficiency and the technology, people can make their country rich and develop. So इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि if we invest in our human capital in a term of money, but in term of education and good health, so money तो फिर अपने आप आती है. We can able to earn money. Money is not a very big thing to earn, but we have a skill to earn money. और उसके लिए we should have to develop a skill. और स्किल डेवलप करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? We have to study, we will have to be educated. Apart from education, we should have a good health also, because if we are not healthy, we are not regular in our study. So ये दोनों चीज साथ साथ में चलती है, health and education. Only a healthy person can capable or more effectively able to get the education. Clear? So today we will continue up to this particular topic. Other topic we will discuss in next video. Okay, so in NCERT, just take up your this NCERT questions, and here from question 1 to 5, these are the questions which you have to do, because up to this we have read the chapter. So I am just discussing the question and answer also. So the first question is, what do you understand by people as a resource? So you have to give the answer of this particular question. And that answer is on your page number, starting of the, you can say, chapter, page number, it is on 16. In the second paragraph, it is written that people as a resource is a way of referring of a country's working people in terms of their existing productive skill and ability. Clear? So this is your question. This is the answer of your first question. Again, then second question. Now what is second question? Second question is, how human resource different from other resource like land and physical capital. Now you have to make a difference that how human resource किससे अलग है, physical capital and human capital से कैसे अलग आता है, how it is different. So you have to just tell. So how the answer, again I am telling you, the answer is on page number, you can see in 17, left hand side. Let's discuss के नीचे जो पैराग्राफ्स है, in that you can find the answer. But before doing the question answers, first you read up to the chapter which that at least up to that particular topic जहाँ तक हमने पढ़ा है आज. Then only you can able to find out the answer. After that, the question third. So question third and fourth, we will just merging these two in one, because the answer of both is same. That what is the role of education in human capital formation and what is the role of health in human capital formation. So the answer of both is same, and the answer is on page number 19. Again left hand side में दिया है, in second paragraph you can able to find the answer. Okay, investment in human resource can give high return in future. This investment of one people on people in the same as investment as land and capital.
So again, after that you can find the answer on page number 17 also. Again starting में है, more educated and healthy people gain through higher income. Society also gain in other indirect way, because the advantage of more educated of or a healthy population is spread to those also who themselves not directly educated or given health care. So this is the answer of these two questions. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, मर्ज करके एक कर दिया है. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन एन इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ? कि हेल्थ किसी भी एक इंडिविजुअल के लाइफ में क्या पार्ट प्ले करती है. इज इट प्ले अ इम्पोर्टेंट पार्ट? सो according to you, is it play an important part in your own life? So this answer you have to do it yourself, because it is a thinking answer, and you just think and write the answer कि क्या health is a important part of your life. अगर है तो कैसे, how? Just write in 2 or 3 points how health is important part of your life. So NCERT 1 to 5 questions करने हैं, but because I have merged question number 3rd and 4th, तो total आपके नंबर हो जाएंगे 4. Clear? Okay, I am giving you some more questions. These are the extra questions. I will send you the PDF of these questions. So do these questions. I am just reading out these questions, and we can you can just find out these answer. So the question first, which I will all these questions I am giving you in this particular app by a PDF. Okay. When does population become human capital? Question number 1. When does population become human capital? And the second question, why do educated parents invest heavily in the education of their own child? Then question, how literate parents create a vicious cycle for their children? How literate parents create a virtuous cycle for their children. Then question, up to this we have only read, so only 3 questions, and these questions are of short type. You have to write an answer in 1 or 2 lines only. Clear? So again एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल? कि जो पॉपुलेशन है, पीपल, व्हेन दे चेंज इन अ रिसोर्स, वो रिसोर्स में कैसे चेंज होते हैं. यू हैव टू राइट इट इन 1 or 2 lines. एंड अनदर वन, दैट व्हाई डू एजुकेटेड पीपल, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, व्हाई दे इन्वेस्ट हेविली इन द एजुकेशन ऑफ देयर ओन चाइल्ड. अपने बच्चों की एजुकेशन में वो ज्यादा से ज्यादा पैसा क्यों खर्च करते हैं. What? Tell me the reason. Okay. And the third, that how literate people, how these literate people, पढ़े लिखे हैं, वो virtuous cycle को कैसे बनाते हैं. How these literate parents create a virtuous cycle. Clear? Okay. So only these 3 questions I am giving you in a PDF form. Also I will give you. You just find out. Clear? And in next video we will discuss the further chapter.